Progress for Saudi women is uneven. Despite cultural changes and more jobs, women say Saudi Arabia has advanced significantly in just the past year, with more choices regarding work, fashion, including colored abayas, and social spaces. But restrictions remain everywhere. By Kate Kelly. Kate Kelly covers money, influence, and policy as a correspondent in the Washington bureau of The Times. Before that, she spent 5 years covering the inner workings of Wall Street for The Times business section, focusing on the key players in finance, their relationships and their most transformative deals. Earlier, she covered banking and hedge funds for CNBC. She also spent a decade at The Wall Street Journal, where she covered Hollywood, finance, and the markets. Kate won a Livingston Award for Young Journalists in the National Reporting category for her 3-part series on the fall of Bear Stearns in 2009. She developed that story into a best-selling book called Street Fighters. In 2019, she was part of a New York Times team that won the Robert F. Kennedy Human Rights Award for journalism for its coverage of Saudi Arabia's war in Yemen. She has also won 2 Gerald Loeb Awards. Kate's second book, A Look Inside the World of Commodity Trading, entitled The Secret Club That Runs the World, was published in 2014. Her most recent book, The Education of Brett Kavanaugh, co-authored with Robin Pograbin, was published in 2019. Kate holds a bachelor's degree from Columbia College at Columbia University. December 9, 2021, 5 a.m. ET Riyadh, Saudi Arabia, at the cramped shop where Khaled Ahmed sells the traditional Muslim women's gowns known as abayas. The rainbow of colors is a revelation. In the past, women in Riyadh typically dressed in the same black abaya no matter where they were going. Now, observed Muz Ahmed, 21, there's a differently colored or styled abaya for every occasion: weddings, meeting friends at a cafe, visiting parents. Colored abayas used to be a strange thing for us in Riyadh, something unusual, said Muz Ahmed, the store's clerk. Within a year it has significantly changed. It has become normal nowadays. Since Crown Prince Mohammed bin Salman became Saudi Arabia's de facto leader more than 4 years ago, he has promised new opportunities for Saudi women as part of a broad modernization plan called Vision 2030. The plan, which is advertised across Riyadh on posters and flags, is meant to wean the kingdom away from its historical reliance on oil and shift it toward new industries, including technology, pharmaceuticals and tourism. Crown Prince Mohammed left on a billboard advertising Saudi's Vision 2030 plan in Riyadh in 2018. Credit Tasneem Al Sultan for the New York Times, but to create more job opportunities for Saudis and draw international investors and corporations to the Desert Monarchy. Prince Mohammed is also chipping away at the conservative culture that has kept many women close to home for years and scared away many foreigners. Over the last 5 years, the percentage of women working outside the home has almost doubled, according to official statistics, to 32% from nearly 18%. Women today serve as customs officials at the King Khalid International Airport in Riyadh, client relationship managers at banks and hostesses at restaurants. In addition to changes in the workplace, public space is becoming less strictly segregated by sex. In coffee shops in Riyadh like Overdose, Motto, Caffeine, it's my drug of choice. Male and female customers can now sip lattes in mixed company. Women can attend certain sporting events at stadiums, which was forbidden until a few years ago. They are no longer required to use separate entrances from men, although some establishments still use them. They can also now apply for passports,
live by themselves and travel on their own. But the progress has been uneven. The guardianship system, which despite some recent reforms is still in place, means that women must rely on permission from men, often their fathers or husbands, but in some cases their sons, to enter into marriages and make key decisions. One prominent women's rights activist was jailed for 3 years after pushing publicly for some of the very changes Prince Mohammed wanted to make, including allowing women to drive. She has since been released and has published a research paper on the status of Saudi women. सकाफ़ती तब्दीलियों और ज़्यादा मुलाज़मतों के बावजूद सऊदी ख़वातीन की तरक्की नाहमवार है। ख़वातीन का कहना है कि सऊदी अरब में काम, फैशन, बशमूल रंगीन अबाया और समाजी मकामात के हवाले से ज़्यादा इंतखाब के साथ सिर्फ पिछले साल में नुमायां तौर पर तरक्की हुई है, लेकिन पाबंदियां हर जगह बरकरार हैं। केट केली के जरिया केट केली टाइम्स के वाशिंगटन ब्यूरो में नामानिगार के तौर पर पैसे, असर व रसूख और पॉलिसी का अहाता करती हैं। उससे पहले, उसने टाइम्स बिजनेस सेक्शन के लिए वॉल स्ट्रीट के अंदरूनी कामों का अहाता करने के लिए 5 साल गुजारे, जिसमें फाइनेंस के अहम खिलाड़ियों, उनके ताल्लुकात और उनके इंतहाई तब्दीली वाले सूदों पर तवज्जो मरकूज की गई। उससे पहले, उसने CNBC के लिए बैंकिंग और हेज फंड्स का अहाता किया। उसने वॉल स्ट्रीट जर्नल में 1 दहाई भी गुजारी, जहां उसने हॉलीवुड, फाइनेंस और मार्केट्स का अहाता किया। केट ने 2009 में बेयर स्टार्न्स के ज़वाल पर अपनी 3 हिस्सों की सीरीज के लिए कौमी रिपोर्टिंग के ज़मरे में नौजवान सहाफ़ियों के लिए लियोंगिस्टन अवार्ड जीता था। उसने उस कहानी को स्ट्रीट फाइटर्स के नाम से सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब में तैयार किया। 2019 में, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की उस टीम का हिस्सा थी जिसने यमन में सऊदी अरब की जंग की कवरेज के लिए सहाफ़त का रॉबर्ट एफ कैनेडी इंसानी हक़ूक़ का अवार्ड जीता था। वो 2 जेराल्ड लुएब अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं। केट की दूसरी किताब, द सीक्रेट क्लब दैट रन्स द वर्ल्ड के इनवान से अजिन्नास की तजारत की दुनिया के अंदर एक नज़र, 2014 में शाया हुई थी। उसकी ताज़ा तरीन किताब, द एजुकेशन ऑफ ब्रेट कवना, जो रॉबन पुगरेबन के साथ मिलकर शाया हुई थी। 2019 में केट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कोलंबिया कॉलेज से बैचलर की डिग्री हासिल की है। 9 दिसंबर 2021 सुबह के 5 बजे एट रियाज, सऊदी अरब, एक तंग दुकान पर जहां खलूद अहमद रिवायती मुस्लिम ख्वातीन के गाउन फरोख्त करते हैं जिसे अबाया कहा जाता है। रंगों के क़व्वस ख़ुज़ह एक इंकुशाफ है। माजी में, रियाज में ख्वातीन आम तौर पर एक ही स्याह अबाया में मलबूस होती थीं, चाहे वो कहीं भी जा रही। अब 21 साला मोहतरमा अहमद ने मुशाहदा किया, हर मौके के लिए एक मुख्तलिफ रंग का या स्टाइल वाला अबाया होता है। शादियां, कैफे में दोस्तों से मिलना, वालदीन से मिलना। स्टोर की क्लर्क मोहतरमा अहमद ने कहा, रियाज में रंगीन अबाया हमारे लिए एक अजीब चीज हवा करता था, कुछ गैर मामूली। 1 साल के अंदर उसमें नुमायां तब्दीली आई है। आजकल ये मामूल बन गया है। जब से वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 4 साल से ज्यादा अरसा क़ब्ल सऊदी अरब के हकीकी रहनुमा बने हैं, उसलिए उन्होंने विजन 2030 नामी वसी जदीदकारी के मंसूबे के हिस्से के तौर पर सऊदी ख्वातीन के लिए नए मौक़े का वादा किया है। उस मंसूबे की तशहीर पूरे रियाज में पोस्टरों और झंडों पर की जाती है। उसका मकसद मुमलकत को तेल पर उसके तारीखी इन्हिसार से दूर करना और इसे टेक्नोलॉजी, दुआसाजी और सियाहत समेत नई सनतों की तरफ मुंतकिल करना है। वली अहद शहजादा मोहम्मद, बाएं जानिब, 2018 में रियाज में सऊदी के विजन 2030 मंसूबे की तशहीर करने वाले बिलबोर्ड पर करेक्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए तस्नीम सुल्तान लेकिन सऊदियों के लिए रोजगार के मजीद मौक़े पैदा करने और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों और कारपोरेशनों को सहराए बादशाहत की तरफ राग़िब करने के लिए, शहजादा मोहम्मद उस क़दामत पसंद
सकाफत से भी परहेज कर रहे हैं जिसने कई ख्वातीन को बरसों से घर के करीब रखा हुआ है और बहुत से गैर मलकियों को खौफजदा कर रखा है। पिछले 5 सालों में घर से बाहर काम करने वाली ख्वातीन की शरह तकरीबन दोगुनी हो गई है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 18% से बढ़कर 32% हो गई है। ख्वातीन आजकल रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किस्म हुकाम, बैंकों में क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर और रेस्तोरां में मेज़बान के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। काम की जगह पर होने वाली तब्दीलियों के अलावा अवामी जगह को जिनसी तौर पर कम सख्ती से अलग किया जा रहा है। रियाज में काफी शॉप्स जैसे ओवरडोज, मोटो, कैफीन, ये मेरी पसंद की दुआई है। मर्द और ख्वातीन गाहक अब मुखरोट कंपनी में लेटेक्स पी सकते हैं। ख्वातीन स्टेडियम में खेलों के बाज़ मुकाबलों में शिरकत कर सकती हैं, जो कुछ साल पहले तक ममनू थी। उन्हें अब मर्दों से अलग दाखिली रास्ते इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हालांकि कुछ इदारे अब भी उन्हें इस्तेमाल करते हैं। अब वो पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, अकेले रह सकते हैं और खुद सफर कर सकते हैं। लेकिन तरक्की नाहमवार रही। सरपरस्ती का निज़ाम, जो कि कुछ हालिया असलाहात के बावजूद अब भी मौजूद है, उसका मतलब है कि ख्वातीन को शादी करने और अहम फैसले करने के लिए मर्दों, अक्सर अपने बाप या शोहर, लेकिन बाज़ सूरतों में उनके बेटों की इजाज़त पर इन्हसार करना चाहिए। ख्वातीन के हक़ूक़ की एक मुमताज़ कारकुन को कुछ ऐसी तब्दीलियों के लिए अवामी तौर पर जोर देने के बाद 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया जो शहजादा मोहम्मद करना चाहते थे, बशमूल ख्वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त देना। उसके बाद वो रहा हो गई हैं और उन्होंने सऊदी ख्वातीन की हैसियत पर एक तहक़ीक़ी मक़ाला शाया किया है। Picnicking at Wadi Hanifa Park in Riyadh. Credit. Iman al-Dabba for the New York Times. Those fits and starts are also evident in quotidian ways. Women's attire in Riyadh, though more relaxed than a few years ago, is still far from liberal. Even women who avoid abayas wear clothes with long sleeves, high necklines and low hemlines. They may be using money from their newly earned paychecks to shop for kitten-heeled boots and slip dresses at Zara, but such outfits are still worn only in private settings. It's not like before. Like you have to wear, like, hijab and everything, said Marwa, a 19-year-old university student who was shopping at Muz Ahmed's shop, referring to the traditional headscarf worn by Saudi women. Now you can have free choice, but limited. It's not like you are showing parts of your body. However much things have changed. The culture remains sufficiently conservative, and cautious of angering the authorities, that Marwa, like many of the Riyadh residents interviewed for this article, declined to give her full name. Marwa said other cultural changes, like allowing store owners to remain open during prayer time to accommodate both merchants and shoppers, created problems of their own. Some people who are devout and would pray no matter what, she said, could be offended by the business as usual attitude. It's like you're not respecting the prayer time, she said. Her friend Ala, who wore sweatpants and sneakers under her abaya and sported a wrist tattoo that said, "Trust no one," nodded. During the call to prayer a few minutes later, a number of male store workers nearby locked their doors and walked to the mall's prayer room on an upper floor. On the ground floor, about 10 women, patrons who were wearing black abayas and hijabs, took rugs from a corner pile and knelt on them to pray. Other women sat quietly on benches, watching their children ride around in battery-operated toy cars. Prayer time at a mall in Riyadh. Credit. Iman al-Dabba for the New York Times. A 52-year-old father of 6, who gave only a nickname, Abu Abdullah, said he saw the benefits of more flexible prayer times and new opportunities for women. During traveling, we don't pray, he said.
Even women. They don't pray for 7 days, referring to the fact that women are forbidden to pray when they are menstruating. Several of Abu Abdullah's 5 daughters were standing nearby, eating buttered corn and French fries. One of them, Naut al-Qahtani, 13, said she was thrilled about the changes for women in Saudi Arabia. "I want to work," she said. "I really want to be a doctor." Her father noted that not every dream job would be appropriate. "Some jobs don't fit for some women," he said, citing roles in plumbing and construction work as examples. "It's better to put her in the right place," he added. 5 miles north of the mall, a local soccer club, Al-Shabab, was playing an out-of-town team at Prince Faisal bin Fahd Stadium. It was a mild evening, and the crowd was animated when the home team scored. On the men's side of the stadium, hundreds of men jumped to their feet, chanting and clapping for the players. Across the stadium on what's known as the family side, where women and children were directed to sit, Najiba, a nurse at the hospital complex King Fahd Medical City, was watching with 2 colleagues. Although women have been able to go to sports events in Saudi since 2018, it was only her second time at a match. Najiba, 34, and her friends said that they were seeing far more Saudi women working at the hospital in recent years, and that the idea of women in medical careers had become more palatable to families who might previously have considered a mixed-gender working environment problematic. "Now the family accepts if they have a daughter or a wife working in healthcare," said Najiba, who was a nurse in a neonatal intensive care unit for years before taking on an administrative role. Soccer fans with Hatton Barebri, center, a midfielder for Al-Shabab, after a match in Riyadh. Women have been able to attend sporting events in Saudi Arabia since 2018. Credit Iman Al-Dabba for the New York Times. Below the nurses, a few children were playing in the front row. One child, who had been running around and yelling, was scolded by a female security guard. Several female spectators said they never missed a match. One, a 29-year-old manager at the Saudi British Bank attending with her brother, spoke highly of Riyadh's new entertainment options and the growing economic opportunities for women. "We're so excited," she said. A little after 9:30 p.m. the match ended in a 3-0 victory for Al-Shabab. As the crowd dispersed, one of its star players, the midfielder Hatton Barebri, was signing autographs for dozens of fans through the fence that separated the stands from the field. रियाज के वादी हनीफा पार्क में पिकनिक करेट ईमान अल्दबाव बराए न्यूयॉर्क टाइम्स। वो फिट और शुरू भी कोटेडीन तरीकों से वाज हैं। रियाज में ख्वातीन का लिबास अगरचा चंद साल पहले से ज्यादा आरामदेह है, लेकिन अब भी लिबरल से बहुत दूर है। यहाँ तक कि वो ख्वातीन जो अबाया से परहेज करती हैं वो लंबी बाजू, ऊंची गर्दन और नीची हीम लाइंस वाले कपड़े पहनती हैं। हो सकता है कि वो अपनी नई कमाई हुई तनख्वाहों से पैसे इस्तेमाल करके बिल्ली के बच्चे की हैल वाले जूते और सल्फ ड्रेस की खरीदारी के लिए ज़ारा में इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन उस तरह के मलबूसात अब भी सिर्फ प्राइवेट सेटिंग में ही पहने जाते हैं। ये पहले जैसा नहीं है, जैसा कि आप को हिजाब और सब कुछ पहनना पड़ता है। 19 साला यूनिवर्सिटी की तालिबा मरवा ने कहा, जो मोहतरमा अहमद की दुकान पर खरीदारी कर रही थी, सऊदी ख्वातीन के सर पर पहनने वाले रिवायती स्कार्फ का हवाला देते हुए कहा, अब आप के पास मुफ्त इंतखाब हो सकता है, लेकिन महदूद। ऐसा नहीं है कि आप अपने जिस्म के हिस्से दिखा रहे हैं। अगरचा बहुत सी चीजें बदल गई हैं, सकाफत काफी हद तक कदामत पसंद है, और हुकाम को नाराज करने से मुहितात है, कि
मरवा ने, जैसा कि रियाज के बहुत से बाशिंदों ने उस मजमून के लिए इंटरव्यू किया, ने अपना पूरा नाम बताने से इनकार कर दिया। मरवा ने कहा कि दीगर सकाफती तब्दीलियां, जैसे दुकानों के मालकान को नमाज के वक्त खले रहने की इजाजत देना ताकि ताजिरों और खरीदारों दोनों को एडजस्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो देनदार हैं और नमाज पढ़ते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने कहा, कारोबार के मामूल किराए से नाराज हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप नमाज के वक्त का एहतराम नहीं कर रहे हैं, उसने कहा। उसकी दोस्त अला, जिसने अपने अबाया के नीचे पसीने की पैंट और जूते पहन रखे थे और कलाई पर टैटू बनवाया था जिसमें लिखा था किसी पर भरोसा नहीं, सर हिलाया। चंद मिनट बाद अजान के दौरान करीबी स्टोर के कई मर्द कारकुनों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और ऊपर की मंजिल पर माल के नमाज के कमरे में चले गए। ग्राउंड फ्लोर पर तकरीबन 10 ख्वातीन सरपरस्त जिन्होंने स्याह बाया और हजाब ज़ैब्तन किए हुए थे, एक कोने के ढेर से कालीन लिए और उन पर घुटने टेक कर नमाज अदा की। दूसरी ख्वातीन खामोशी से बेंचों पर बैठी अपने बच्चों को बैटरी से चलने वाली खिलौना कारों में घूमते हुए देख रही थी। रियाज के एक माल में नमाज का वक्त करेक्ट। ईमान अल्दबाव बराए न्यूयॉर्क टाइम्स 6 बच्चों के एक 52 साला वाल्द, जिसने सिर्फ एक उर्फी नाम अबू अब्दुल्ला रखा था, ने कहा कि उसने नमाज के ज्यादा लचकदार औकात और ख्वातीन के लिए नए मौक़े के फवाइद देखे। सफर के दौरान हम नमाज नहीं पढ़ते, उन्होंने कहा। ख्वातीन भी 7 दिन तक नमाज नहीं पढ़ते, उस हकीकत का हवाला देते हुए कि ख्वातीन को ही इसके दौरान नमाज पढ़ने से मना किया गया है। अबू अब्दुल्ला की 5 बेटियों में से के करीब ही खड़ी मुकई और फ्रेंच फ्राइज खा रही थी। उनमें से एक 13 साला नवत अल-कहतानी ने कहा कि वो सऊदी अरब में ख्वातीन के लिए होने वाली तब्दीलियों पर बहुत खुश हैं। मैं काम करना चाहती हूँ, उसने कहा। मैं वाकई में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसके वालिद ने नोट किया कि हर ख्वाबीदा काम मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने मिसाल के तौर पर प्लम्बिंग और तामीराती काम में किरदार का हवाला देते हुए कहा, कुछ मुलाजमतें कुछ ख्वातीन के लिए मौजू नहीं होते। इसे सही जगह पर रखना बेहतर है, उन्होंने मजीद कहा। माल से 5 मील शुमाल में एक मकामी फुटबॉल क्लब अल-शबाब प्रिंस फैसल बिन फहद स्टेडियम में शहर से बाहर की टीम खेल रहा था। ये एक हल्की शाम थी और जब होम टीम ने गोल किया तो हजूम मुतहर्रिक था। स्टेडियम के मर्दों की तरफ सैकड़ों मर्दों ने अपने पैरों को छलांग लगा दी, खिलाड़ियों के लिए नोरे लगाए और तालियां बजाएं। स्टेडियम के उस पार, जिसे फैमिली साइड के नाम से जाना जाता है, जहां ख्वातीन और बच्चों को बैठने की हदायत की गई थी, अस्पताल के कॉम्प्लेक्स किंग फहद मेडिकल सिटी की एक नर्स नजीबा 2 साथियों के साथ देख रही थी। अगरचा ख्वातीन 2018 से सऊदीया में खेलों के मुकाबलों में जाने के काबिल हो रही हैं, लेकिन ये किसी मैच में उनका दूसरा मौका था। 34 साला नजीबा और उसकी सहेलियों ने कहा कि वो हालिया बरसों में बहुत ज्यादा सऊदी ख्वातीन को अस्पताल में काम करते देख रहे हैं, और ये कि तबी कैरियर में ख्वातीन का ख्याल उन खानदानों के लिए ज्यादा खुशगवार हो गया है जो शायद पहले मुखलूट सिंफ के काम करने वाले माहौल को समझते थे। मसला अब खानदान कबूल करता है कि अगर उनकी बेटी या बीवी सेहत की देखभाल में काम कर रही है, नजीबा ने कहा, जो इंतजामी किरदार अदा करने से पहले बरसों तक नौजायदे इंतहाई नगहदाश्त के यूनिट में नर्स थी। रियाज में एक मैच के बाद अल-शबाब के एक मिडफील्डर हितन बहबरी के साथ फुटबॉल के शायकीन ख्वातीन 2018 से सऊदी अरब में खेलों के मुकाबलों में शिरकत करने के काबिल हैं। करेक्ट। ईमान अल्दबाव बराए न्यूयॉर्क टाइम्स नर्सों के नीचे अगली कतार में चंद बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा, जो अधर अधर भाग रहा था और चीख रहा था, एक खातून सिक्योरिटी गार्ड ने इसे डांटा। कई ख्वातीन तमाशाइयों ने कहा कि वो कभी भी मैच नहीं छोड़ें।
ایک سعودی برٹش بینک میں ایک 29 سالہ مینیجر جو اپنے بھائی کے ساتھ شرکت کر رہی تھی، نے ریاض کے تفریحی اختیارات اور خواتین کے لیے بڑھتے ہوئے معاشی مواقع کے بارے میں بہت زیادہ بات کی۔ ہم بہت پرجوش ہیں، اس نے کہا۔ رات صبح کے 9:30 بجے کے تھوڑی دیر بعد میچ الشباب کی 3 سے 0 سے فتح پر ختم ہوا۔ جیسے ہی ہجوم منتشر ہوا، اس کا ایک اسٹار کھلاڑی مڈفیلڈر ہتن بہبری میدان سے اسٹینڈ کو الگ کرنے والی باڑ کے ذریعے درجنوں شائقین کے آٹوگراف پر دستخط کر رہا تھا۔